Okay, let's turn from the Parivarwad controversy to another controversy, this time that puts the Election Commission once again under the scanner. Tonight's Get Real India story, because amidst the ongoing voter list revision nationally, two booth-level officers in two different states have died by suicide, while a third officer in Bengal has threatened to do the same. Families have alleged unchecked pressure, and several other BLOs have said that long hours and an early December deadline by the Election Commission have pushed them to breaking point. The Election Commission now faces questions over workload and accountability. Take a look at tonight's Get Real India story. Suicides by two booth-level officers in two states, Rajasthan and Kerala, have cast a shadow on the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls underway in 12 states and union territories. Mukesh Chand Jangid, a 48-year-old school teacher, took his life in Bindayaka on the outskirts of Jaipur. Jangid, who worked as a BLO, jumped in front of a train on Sunday. The family claims Jangid left a suicide note. पुलिस के कहने पर मैंने उनकी जेब से तलाश की तो एक में से 500 का नोट और कुछ चाबियां और छोटे कागज थे। मैंने पुलिस वाले को दे दिया और दूसरी जेब पुलिस वाले ने बोला दूसरी जेब में देखो। दूसरी जेब मैंने निकाला तो एक कागज था। कागज में मैंने खोलते ही उसमें देखा सुसाइड नोट लिखा रखा है। तो मैंने जिस खोलते फोटो लेनी या पढ़ने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने मेरे से छीन लिया। They're blaming SIR workload for the suicide. सुसाइड नोट में लिख रखा है भाई, उन्होंने भाई धमकी दे रहे हैं, वो बार बार धमकी दे रहे हैं, बस सस्पेंड कर देंगे। इसी SIR के लगे हुए तब से परेशान थे। वो सुबह जल्दी चल जाते, शाम को लेट आते थे। और पिछले 5-7 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई थी बम्बोरी, तो वहाँ से भी उनके अधिकारियों ने प्रेशर बना रखा कि आपका काम नहीं हो रहा टाइम पे, आप काम करो, इसलिए प्रेशर उनके पे था। Jangid's family accused the police of not carrying out a proper investigation. The police denied the charge. जो रिपोर्ट उसमें दी है, प्रथम सूचना जो दी है उसके आधार पर हमने मर्ग दर्ज की है। उसमें मर्ग भी बिल्कुल FIR की तरह उसी हिसाब से उसमें जांच होती है। जहाँ तक आप बता रहे हैं सुसाइड नोट, जो कथित सुसाइड नोट है, उसके बारे में चूंकि ये जांच का विषय है तो जो जांच उसमें पुलिस उसमें कर रही है, जो भी कंटेंट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करें। In Kerala, 44-year-old Anish George died by suicide allegedly due to pressure linked to SIR duties. Anish was found dead in Kannur on Sunday. The district administration, however, denied any link between Anish's death and SIR. Booth-level officers in the state boycotted work and took out a march on Monday. ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ഒരു സാവകാശമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ പ്രായമായവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി വൈകിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് രാവിലെ 7 മണി മുതലൊന്നും ജോലി ചെയ്യാനും ഇറങ്ങിപ്പോകാനും എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ല. Another issue raised by the BLOs is allotment of areas they are not familiar with. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം അനുവദിക്കണം, അതുമല്ല അതനുസരിച്ചുള്ള ഹെൽപ്പും കൂടെ കിട്ടണം. ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ അറിയാന്നുള്ള പരിസരം അറിയാന്നുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. Meanwhile, a BLO threatened to commit suicide at the Katwa BDO office in East Bardhaman district of Bengal. The incident took place during the SIR form digitization training. BLOs in many states are claiming the December 4 deadline for submitting enumeration forms is unrealistic. Similar demands were made during the Bihar leg of SIR, but the EC did not yield then. Will budge this time? With Devankur Vadhavan and Shivimol KG, Bureau Report, India Today.